स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो। हाँ, हाँ, विज़ुअल है। So first of all, good afternoon, all of you. I am presenting my topic uh, on a problem like in our day-to-day life, or we are having a type of situation in which we are lack of the information of any type of like schemes of governments, and we find it as a regretful message or a regretful feeling in us, like we have not got the information on time. Either it will be any type of internships scheme or any type of like a scheme which is beneficial for you only. So I am addressing a challenge or a problem that how we can tackle this one of the problem in which we are addressing the problem of the finding government schemes for any person or a citizen. So there are mainly three types of mainly more than three types of stakeholders or person who are directly connected to this problem, because as we are a tech savvy person, so we might be uh, jiggling, or we might be googling all the things on our desktop or on our devices, but the person who are residing on rural areas in the village and who are basically farmers, which uh, on whom they do not have any type of support of these type of applications or mobile devices or internet, they find it very like tricky, or they they pay a lot of money to get the actual benefit of this type of schemes. As I am also belong to a village or rural area, so I actually got to know the information about what is happening on the ground basis. So my problem is addressing that type of challenge. So one of my solution to is Kalyan Samriddhi, in which Kalyan means like the benefit of the person, and Samriddhi means the prosperity, how we can achieve the benefit of from that scheme of the government. So Kalyan Samriddhi, which is empowering citizens through accessible government schemes. So problem statement, as I've already discussed, many citizens remain unaware or unable to access welfare programs because lack of information, or they do not got the information on time, because something like they do not have any type of like resources to how to get these informations. So Kalyan Simriddhi aims to bridge this gap by providing a centralized user-friendly portal. Like I am recently targeting to make it a website as a platform, because it will be easily accessible to all of the person which will be the stakeholders of this Kalyan Samriddhi. So, India's welfare initiative, like we are talking about the background, numerous government schemes target citizens across different demographics like farmers, students, women, senior citizens, and all of the persons who are also businessmen are the mainly stakeholders. Like there are schemes which are targeting directly to the farmers, which will get the benefit from them directly. And challenges are like lack of awareness and complexity, like they are not having the proper resources, how they can actually get the benefit from this. So these are all the backgrounds and challenges what we are addressing in this. So, addressing the problems of like what we are having in the right time now. So, first one in information gap, as I have already discussed, like they do not have proper information on time. Eligibility complexity, like uh, if they are compatible to avail that scheme or not, they are not having that type of information. Identifying relevant schemes, like which scheme is better for me to avail that offer or to avail that profit. Like they are not getting the proper like idea of what and how they can get the maximum benefit from these schemes. And lower participation because they do not have information, and sometimes the schemes got expired when they are aware of that, and they do not have any type of like on time or like pre information of what these schemes are and how they can get actually benefit of it. So we are making a digital solution in which we are having a website or a web-based app in which we will take the details from the user, like what is their name, from which state they belong, and what is their age group in which they are lying to avail that type of any specific scheme which is given by the government, either it is a state government or a central government.
including details includes detailed information on eligibility, benefits, and application process. Like if there are any type of scheme which is addressed by the government, then we are having all types of description of the schemes in which they can easily get to know all the details of that scheme. And multi-language support, like primarily we are addressing all over the Indian states. So I want to have that multi-language feature in that website, by which they can change the language by tapping a click, or they can read all the details in their local native language, as all the farmers are easily compatible with Hindi. But somehow also like the farmers of other states, like we are talking about Bengal or Odisha, they are convenient in local language like Bengali or Odia. So these type of extra language features I want to implement on it. So key features is user friendly interface to make it interactive with the key stakeholders like farmers or students or other persons. And personalized result means filter schemes, right? They can filter the schemes according to their demographics or income status. And search and bookmark. A search button will also be there on the UI, so that they can, if they are aware of the scheme in their word, like if they are having the information of one word of data scheme, they can actually search it and they get the all the information on that platform. Real time updates, like if there are any type of schemes which is updated on the time, and they are having like of buttons or any type of like tags on that scheme that it is active or it is expired, so that they can timely get information about it. Multi-language support I have already discussed. And integration with government APIs, like to get all the information from the government, I am also researching over the APIs, as I have discussed with all of you guys in earlier meet. So it will be accessible with the APIs or data which will be provided by government. So I'm working on it as well. Use cases are, I have already discussed in the starting, like farmers, students, senior citizens, women, and general citizens of the country. So architecture diagram, which I can understand, I have made it like first I am designing over the user interface, which is overly, I am working as a UI UX intern or product designer. So it is all designed on Figma. And other than that, front end or back end, like back end, if we are connecting some of the APIs of the government, so it will there be used. And databases for like I have to already research about, because I'm not a tech savvy person. So front end for the coding of that user interface which I will be designing, and API and admin panel to restore the data what we will get the input from the users directly. So tech stack, as I have searched over the various GPTs that we can use this type of tech stack. So HTML, CSS front end, and APIs and hosting. These all things are my like third priority level things, because I am firstly targeting over the UI and front end back end integration of that project. Business plan is empower undeserved citizens, like they get the benefit from that scheme directly. Other than that, I also want to integrate a feature of like if they are enrolling with a mobile number or any type of things, they can directly get the email. They can directly get the information over their phones when their schemes is already added in our database or on our website. Increase participation, because boosting awareness, like we can also uh, make it on ads if we get the profitable, if we make convert it into the product as well. Digital governance, support the government support the government's idea like digital India, digital Bharat plan. And transparency, simplifies scheme discovery and builds citizen trust in government services, like they can actually get the benefit and they will be trusting the government schemes. So as it is already given by the team to add on the PPT, so this is all of it. And yeah, this is all about the project which I am aiming to build. Uh, Hello. Okay, Abhinav, done. Yeah, Okay. I have completed the presentation. Okay. आ, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है अभिनव से? AI कहाँ यूज हुआ है इसमें?
So one use case of कुछ AI will be like a real-time chatbot which will be integrated in it because yeah, I have also to think upon that how we can make it more accessible through AI. Yes, actually, one मॉडल कौन सा यूज use कर रहे हो case उसमें? just uh, sorry. चैटबॉट के लिए मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो उसमें? अभी मैंने इतना रिसर्च करा नहीं है क्योंकि मैं मेरा जो भी अभी प्रोजेक्ट मतलब जो मेरे को समझ में आया वो मेनली उस प्रॉब्लम को वही एड्रेस में लग रहा है कि मैं एपीआईज वाला पार्ट कैसे लाऊं और जो गवर्नमेंट से जो भी चीज़ आएगी वो मैं यूज़र को कैसे इंटीग्रेट करूंगा वो वाली चीज़ है। बाकी मैं चैटबॉट के स्ट्रक्चर लिए तैयार हो देखता हूँ गया है मैं क्या कर एचटीएमएल का? सकता हूँ। फ्रंट एंड का कुछ तैयार किया है अभी मेरा तक बस अभी उस पे? लैंडिंग मेरा दिखा सकते हो? मेरा बस अभी दिखा सकते लैंडिंग हो? पेज रेडी हुआ है। दिखा सकते हो? हाँ हाँ बस मैं दिखा रहा हूँ। जा 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 कुछ वेट कर रहा सो अभी मैं लैंडिंग पेज पे जो काम कर रहा हूँ तो उसमें कैटेगरीज वाइज होगा कि लाइक आप स्टेट कैटेगरी मतलब कैटेगरीज वाइज की लाइक जो भी आपकी कैटेगरी किस टाइप का स्कीम आप ढूंढ रहे हो उसके बाद स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल वाइज आप स्कीम वगैरह देख सकते हो। बाकी मैं इसका और देख रहा हूँ कि क्या इसको मैं और इजी कर सकता हूँ जिससे लोकल ऑडियंस या जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं उनको मतलब जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनको इजी रहे इस चीज़ को यूज़ करने में। ओके तो पे अभी बस हेडिंग मेरा वो लैंडिंग हेडर पेज पे रेडी हुआ प्रोडक्ट है। लिखा है? नहीं ये इसको मेरे को ठीक करना है मैंने भी बोला ना मतलब मैंने ये हेडिंग अपना जो हम्म, लास्ट प्रोजेक्ट में ब्लूरॉक पे काम कर रहा हूँ मतलब कोई और प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ मैंने वही उसका लग वो रहा है हेडर मेरे को। उठाया हुआ है। हाँ हाँ ये अभी थोड़ा रिफाइन होगा ये उतना वो रहेगा नहीं। ओके ठीक है। संतोष आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ पूछो। मतलब देखो मैं कुछ कहना चाह रहा था ये प्रोजेक्ट जो है अवेयरनेस के लिए ज़्यादा यूज हो रहा है और इस पे सब्सक्रिप्शन मॉडल तो मुझे नहीं लग रहा चल पाएगा। हाँ बट हाँ ये एड्स के थ्रू इसको बिजनेस में लाया जा सकता ओके है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और आवाज़ नहीं आ जैसे कि इसमें एआई का यूज अभी उतना कुछ खास दिखा नहीं लेकिन कर सकते हैं बेसिकली पर्सनलाइज चैटबॉट लगा करके जो भी डेटा बैकएंड से आ रहा होगा उसको और हम्म सिंप्लीफाई करके backend में प्रेजेंट किया जा सकता है हम्म। और और शायद कस्टमाइज प्रॉम्प्ट भी डाली जा सकती है मतलब कि हम्म, हो सकता है यूजर बहुत अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हो हम्म, तो उसको प्रोसेस करके एआई के थ्रू फिर उसको वहां पे दे सकते थे। हम्म, ओके ओके। ठीक है। और टेक्स्ट है कि मतलब टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रहा है इसमें फ्रंट एंड के लिए। वो तो टेक स्टेक बताया अ, उन्होंने मैं प्रेजेंटेशन पे। हाँ मैं अभी जैसे मेरे को जितना मेरे को नॉलेज था मैंने वो लिख दिया है लेकिन मैं उतना प्योर कोडिंग में नहीं जाऊँगा। मैं देख लेता हूँ कि मैं और क्या बेटर यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरे को बहुत हल्का कोड करना पड़े। हाँ बट जावा स्क्रिप्ट तो नहीं एटलीस्ट तो फिर लगेगी मेरी ठीक ठाक। सॉरी। जावा स्क्रिप्ट तो लगेगी बराबर से है ना। तो ये तो किसी फ्रेंड को ले सकते हैं क्या सर टीम में। क्या चीज? किसी फ्रेंड को टीम में ले सकते हैं क्या। हाँ टीम में इंक्लूड कर सकते हो ना, 4 लोग मैक्सिमम इस पे आ सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे। तो अभिनव ये तो आसान हो जाएगा। देखता हूँ मैं भी अगर चाहता आपका हूँ मैं खुद बैलेंस है, काम करूँ अगर क्योंकि मेरे को अभिनव मैं हाँ हाँ जाओ जाओ उधर जाओ, मीट कर रहे हैं। हाँ देखो बाद में आना, जाओ। हाँ रुक गए जाओ। म्यूट हो गया आप। फिर मैया इसको लेके जाओ उधर, मीट कर रहा है अभी। हाँ हाँ क्या कह रहे थे? आप आ, म्यूट हो गए थे बीच में। हाँ हाँ तो एक्चुअली इस पे मैक्सिमम आप लोग 4 लोग टीम अप कर सकते हो। इनमें से जैसे आर्यन इंटरेस्टेड है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, संतोष आप हो तो उस पे हेल्प कर सकते हो अभिनव का। ठीक है
क्योंकि वेलकम अब अंकल, मुझे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि का मैं क्वेरी भी है कि उसको खुद ही यूआई यूएक्स ज्यादा मालूम है, ठीक है, तो टेक स्टैक आप लोग बता दोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा उसका और ज्यादा। ठीक है सर, हाँ मैं लेकिन असिस्ट कर लेकिन दूंगा। आप हाँ हाँ बताओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही मैक्सिमम काम करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक पर्सनल प्रोजेक्ट हो जाएगा और सीखने को भी काफ़ी मिल जाएगा। ओके ओके मैं हेल्प लगी मैं ग्रुप पे मैं खुद बता दूंगा, लाइक मोर मतलब थैंक यू फॉर द हेल्प, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद सीखूं पहले इस पे थोड़ा। ओके ओके डेफिनेटली। यस यस यस। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक यू। तो ठीक, ओके।